time in the introductions and all the stuff. So, going ahead, I'll give a short, brief introduction about Dr. Sudhir Joshi. So, our speaker. So, Dr. Sudhir Joshi is an MD in Ayurveda, and he's also a district Ayurveda officer at District Panchayat Vadodara. His main projects include Nutrition Brigade Vadodara, malnutrition projects, Ayush Gram projects, research on COVID-19 by Ayush, and obviously his organization that he started, that is SDG Brigade India. Also, he's like holding various positions, and like his main vision is for working for Sarvasreshta Bharat up till like 2047. So he holds many good holdings at all over the state governments and also other organizations. Like he's a nodal officer at Collectorate Vadodara. He's mentor to Atal Tinkering Lab in various schools and initiated by Niti Aayog, New Delhi. He is also a chief coordinator at Nutrition Brigade Vadodara. He is president of Lions Club RCC Vadodara. He is founder and director of SDG Brigade India, and he is also a co-chairperson in Niti Aayog committee at Bilzer MUN. So he is connected with so many things, and like he's a dynamic person, I can say. And we also had an event previously with him, so I think he would share some of his experiences and also many things. So I think that would be interesting to hear you, sir. So I welcome you on this today's occasion, and I hand over the mic to Dr. Sudhir Joshi for starting this event, and then further taken by me and Prachi, who are the youth delegates for today. Okay. Uh, Thank you, Mr. Dairi Rajguru. Good evening to all. First of all, wishes a very happy World Environment Day. Uh, Today, we are going to talk, rather, we can say discuss in some of the topics. Uh, Let me start with Sustainable Development Goals. Most of here audience in the students well known that United Nations declared 17 Sustainable Development Goals. If we focus on the environment, so exactly SDG 13, it relates with the environment. What is SDG 13? SDG 13 is climate action. So, for climate action, we have to come forward because next generation has to face so many issues. As we observed in the recent COVID-19 crisis, we have shortage of beds, we have shortage of oxygen, shortage of medicines, and so many things. And we feel that we have to know, we must come forward for this climate action emergency as a part of emergency service. So what SDG 13 focus on? SDG 13 focuses on taking urgent action to tackle climate change and its impacts. So SDG 13 basically uh, SDG 13 basically meant for climate action. So what we should do? So first we have to understand climate change. Climate, what is climate change? Climate change is right now is threatening the way we live and the future of our planet. Severe weather and rising sea levels are affecting people, and from small rich business is affecting everyone. We are seeing nowadays, especially the poor and vulnerable are more affecting the crisis of this climate action. If left unchecked, climate change will undo a lot of the progress made over the past years in the development. अभी तक हमने बहुत कुछ प्रोग्रेस किया है, विकास का दर हमने हासिल किया है, लेकिन if we are not manage this climate action process, then again we will fail. So it's a real time need, or we can say real time pay attention matter, that we should come forward for it.
Regarding the resilience to climate change needs to be developed, and the whole population should be well prepared to face any kind of natural disaster. See, we are facing uh, issues of the environment. Just now, we have facing the वावाजोड़ा, जिसको बोलते हैं ये तोकते। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि इफ नेचर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग what we want, then that means we have to be prepared, we have to be alert, we have to come forward. और क्या करेंगे हम? हमें एसडीजी का फोकस मैं आपको बताऊं, वी हैव डिसाइडेड 6 focus area. Let me tell you 6 focus area we should work. First of all, preparing renewable energy, clean fuel, and energy efficiency measures. This is the first focus area. Renewable energy. Second, reducing pollution from all possible sources. As we know very well that uh, our Vadodara Municipal Corporation has taken initiative in so many different measures. So we are now on the track of reducing pollution from all possible sources. The third one is adapting a climate change. The government of Gujarat, do you know? Government of Gujarat formulated State Action Plan for Climate Change, that is SAPCC. Now, in target of 2022 and in target of 2030, all have to follow this state action plan of climate change. The fourth thing, raising awareness and including climate change in education. From early childhood, all the children must know about the climate change, about the environment, as well as the focus areas. So raising awareness, like such type of webinars, such type of sessions, such type of initiative activities uh, is very good, useful for the upcoming generation. The fifth one is promoting research on climate change, clean energy and technology. Research भी इस पे होना चाहिए. This is also essential. And last one is improve disaster management to save life and assets. Disaster management भी climate change का एक portion है. So overall in SDG 13, in regarding the environmental matter, we should come forward for these 6 focus areas. Right now, we have a celebration of World Environment Day. See, today I have visited the Social Forestry Division, and excellent work have been carried out by the Social Forestry Division. We are giving 1 lakh Tulsi, Ossimum sanctum. We are giving 1 lakh Tulsi plants to Barodian people. Tulsi is a very good plant. And in my department, today my 35 medical officer has done 2000 medicinal plants distribution. 2000 medicinal plants, which is very useful. So we have to come forward for various activities for this climate change action. As per the SDG, let me tell you, the SDG 13 is comprises of various targets and indicators. SDG 13.1, let me tell you 13.1. 13.1 is strengthen resilience and adaptive capacity to climate related hazards and natural disaster in all countries indicators. ये है 13.1. उसके अंदर उनके इंडिकेटर्स में बहुत सारी मैटर है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जो डिजास्टर से डेथ होती है, मिसिंग पर्सन्स है, अफेक्टेड पर्सन्स है, जहां स्ट्रेटेजी में हम फेल होते हैं, तो इसको हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है. वी हैव टू कम forward for strategic intelligence, with strategic intelligence, and our implementing part may enhance the SDG 13.1. And what is in 13.2?
integrate climate change measures into national policies, strategies and planning. जो national policies हमारी है उसके साथ इसको integrate करना है. In SDG Brigade, we started with 3I: inform, inspire, integrate. Without inform, you will not inspire. Without inspire, you will not know how to integrate. And in SDG, it's very essential to know the integration of SDG. All SDG is related with each other. And without knowing the whole SDG cycle, you can't get outcome from any SDG. So let me tell you with immense pleasure that in SDG Brigade India, we have put focus on 6 SDG, and we have formulated 6 teams. These are the working in the SDG 1 to SDG 6. What is in SDG 13.3 as per this climate change? Improve education, awareness rising, and human institutional capacity on climate change, mitigations, adaptations, impact reductions, and early warning. So overall, raising awareness by the students in college or school is the utmost need, or we can say real-time need right now for this climate change action. So overall, in 13.1, 13.2, and 13.3, we have seen that we must come forward for it. And regarding the targets, various targets, so if we focus, as I earlier mentioned, the 6 areas, 6 focus areas, if we focus on 6 focus areas, we can get absolutely good result. The main thing in community is habit. We have a faulty food habits. We have a very poor habits to maintain quality environment in our area. So we have to come forward for all this. आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जैसे बीइंग एमडी आयुर्वेदा, आपको मैं इंटरेस्टिंग लेक्चर बनाना चाहता हूँ आज का. तो मैं आपको बता दूं कि ये राशि, नक्षत्र और ग्रह, ये तीनों के एक एक वृक्ष है. आपको ये जानना बहुत जरूरी है. हमारी जो राशि है, नक्षत्र है, ग्रह है, उसको हम अगर जान लेते हैं, उसके वृक्ष की अगर हम उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका प्लांटेशन करते हैं, उसके नीचे हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है. आधि भौतिक आधि दैविक जो डिसीज होते हैं जो महामारी में, उसको हम दूर कर सकते हैं. So today I will share you all the 3 categories. Let me start with the राशि. We have 12 राशि. तो राशि के अनुसार वृक्ष क्या है मैं आपको बता देता हूँ. मेष से मैं स्टार्ट करता हूँ. मेष के लिए आंवला, वृषभ जांबू, मिथुन खदीर, कर्क वांस, सिंह खाखरो, कन्या बिल्व, तुला अर्जुन, वृश्चिक शिमलो, धन बोरसली, मकर वड, कुंभ कदम्ब और मीन लिमडो या आम्र. ये 12 राशि के 12 वृक्ष है. Yesterday, Red FM taken my interview, and Vadodara Municipal Corporation is going to launch नक्षत्र वन. नक्षत्र वन बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है. तो आपको ये भी मैं बता दूं कि 27 नक्षत्र है, और नक्षत्र जो है वो वाइफ है, वो वाइफ्स है चंद्र की. और चंद्र का जिस वाइफ्स के साथ जब मिलन होता है, जैसे मेरा बर्थ 12:45 को हुआ, तो उसी टाइम नक्षत्र और राशि डिसाइड होती है. तो चंद्र उस टाइम था, मान लो पूर्व भाद्रपद में, तो ये मेरा नक्षत्र होता है, और इस बेस से मेरी राशि कुंभ होती है. तो ये जानना बहुत जरूरी है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल नक्षत्र एंड नक्षत्र के रिलेटेड वृक्ष. सबसे पहले अश्विनी. अश्विनी के लिए कुपिलु, भरणी नक्षत्र आमला, कृतिका उदुम्बर, रोहिणी जांबू, मृगशीर्ष खदीर, आद्रा के लिए अगरू, पुनर्वसु के लिए बावल, पुष्य के लिए पिप्पल, आश्लेषा के लिए नागकेसर, मघा के लिए वड, पूर्व फाल्गुनी के लिए पलाश,
उत्तरा फाल्गुनी के लिए शमी, हस्त, जूही, चित्रा, बिल्व, मूल, सफेद दामन, स्वाति, अर्जुन, विशाखा, नागकेसर, अनुराधा, बकुल, ज्येष्ठा, शिमलो, पूर्वाषाढ़ा, अशोक, श्रवण, आकड़ो, उत्तराषाढ़ा, फणस, घनिष्ठा, शमी, शतभिषा, कदम्ब, उत्तर भाद्रपद्र, लिमडो, पूर्व भाद्रपद्र, आम्र, और लास्ट में रेवती, महुड़ो। तो इस तरह से 27 नक्षत्र का 27 वृक्ष होते हैं। और अभी मैं लास्ट में आपको ये बता दूं कि जो ग्रह है, 9 ग्रह के भी एक एक वृक्ष है। सूर्य का अर्क, चंद्र का पलाश, मंगल का खदीर, बुध का अपमार्ग, गुरु का पिप्पल, शुक्र का उदुम्बर, शनि का शमी, राहु का दुर्वा और केतु का दर्भ। ये जो ग्रह है 9, उसके भी वृक्ष है। तो ये 12 राशि, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह। आप अभी से डिसाइड कर दीजिए, जान लीजिए कि आपका कौन सा वृक्ष है। उसका आप प्लांटेशन कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली गिव यू immense benefit. So these are the topics which I want to share you today regarding the SDG 13 climate change as well as the medicinal plants. अभी जो हमें करना है इमरजेंसी में, वो ये करना है, जैसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स कम होते जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जांबू जिसको गुजराती में बोले छे, ये बहुत कम होते जा रहे हैं। तो वी एनकरेज एंड कम फॉरवर्ड फॉर सच टाइप ऑफ प्लांटेशन ऑफ मेडिसिनल और हर्ब्स which will useful to us, as well as we want to increase their strength. So these all are the topics, or which I want to explore and share to you. We have two more dynamic youth, Prachi Vyas and Thairi Rajguru. They will also interact with us. So this is from my side. Thank you patiently listening me. Thank you very much. Thank you. Sir, I think that was really fantastic and very new information, I can say, for the students, I can say, and also the people who have already joined, right? So what we can do is, like, we can take this forward. And as you said, your interview was taken by the radio, and also VMC is gonna deploy this nakshatra planting in Vadodara. So I think we can even do in the other cities across the Gujarat also, and we can take ahead forward, right? Yes. Okay. So now we have like any questions. Do you have any question for Sudhir sir? You want something to know regarding Ayurveda, or which tree can, like, which tree can you, which plant, I can say, which shrub can you plant in your garden, and like which is easy to cultivate or something like that. So you can go ahead, you can unmute your mic, like you have 5 minutes more to talk with him. Then I think we'll proceed with me and Prachi. So anyone can unmute yourself and ask the sir. I will say some points there. Sure, sir, sure. I am appealing all the students and citizens of Baroda, kindly visit Vadodara Nursery. Vadodara Nursery is very near to Fatehganj here. So you can get plenty of medicinal plants very free. Uh, Plenty of medicinal plants with no cost. Today I have visited the place, and numerous people in the queue I have found there. So you will get medicinal plants from nursery. So I think can we take as a oath today there that all the participant in this webinar take uh, or give promise that minimum 10 plants
minimum 10 plants, they will share or they will care for it. Okay, there you Thank you so much, sir, for Yes, your yes. information. It was really helpful. Moving on to Dhairya Rajguru. He is postgraduate student in cell and molecular biology. He completed his research project at IIT Bombay on ovarian cancer. He was also selected for International Fugger Science Show at Stanford, and now recently he got an position of dissertation at IISc Bangalore. He is also a member of prestigious official group of Indian Scientists Response to COVID-19 ISRC. He has also started an national initiative for science communication and interactive forum for students of UG, PG, and PhD, as well as he is a nature photographer and a wanderlust. That's what brings him here today. With this kind introduction, I welcome my friend Dhairya today. Over to Uh, you, Dhairya. sure. So thank you for this fantastic introduction, I can say. So, like as you all know, I am not particular from the environmental background, and like Prachi, she is completely into environmental sciences. So I am more into the molecular biology and those fields. So today I have bring up some exciting facts, I can say, for you all. Like as we know that environmental issues like global warming, oil spillage, and like rivers and everything you see is polluted outside. So I got some exciting facts for you all, which you might seem like you might all know, but I can say that that might be some new for many of you. So first thing that I brought for you all was like in so that there's Professor Anand Mohan Chakrabarti. So in 1971, he's the scientist. He's the first scientist who patented a biological life form. मतलब, in the patent zone, you cannot patent a biological organism. But this was the first guy who actually patented a biological organism. And what he did was like going a bit into a microbiology. So उसने क्या किया? I think Hindi might be comfortable for you all. So what did a scientist do? उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया में जीन्स होते हैं. तो द प्लाज्मिड जीन्स जो होता है, तो उन्होंने एक ही बैक्टीरिया में उन्होंने ऐसा एक बैक्टीरिया जनरेट किया जहां पे उन्होंने चार अलग अलग बैक्टीरिया के जीन्स को कंबाइन किया और एक बैक्टीरिया बनाया जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं आज. तो उन्होंने ऐसा एक बैक्टीरिया बनाया जिसका नाम है स्यूडोमोनास प्यूटिडा. तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा की चार स्ट्रेन होती है, चार अलग अलग टाइप के स्यूडोमोनास प्यूटिडा होते हैं. ठीक है, एक होता है जो जाइलिन कलेक्ट करता है, एक होता है जो कैम्फर लेता है, एक होता है जो ऑक्टेन डाइजेस्ट करता है, और एक होता है जो नेप्थेलिन डाइजेस्ट करता है. तो ये जो होते हैं वो बेसिक वेस्ट होते हैं एक पेट्रोलियम वेस्ट में से. सो व्हाट डिड ही डू इज, ये चारों स्ट्रेन के जो जीन्स होते हैं उनको एक साइड कंबाइन करके एक ही ऑर्गेनिज्म में डाला. इसका रीजन था कि जब ये चार ऑर्गेनिज्म अलग अलग करके हम डालते थे तो वो एक दूसरे को मार डालते थे. तो इस साइंटिस्ट ने चारों के जीन कंबाइन करके एक ही ऑर्गेनिज्म में डाल दिया और एक ऐसा एक ऑर्गेनिज्म बनाया जो ऑयल को खाता है. सो दैट्स सो इंटरेस्टिंग. और ये चीज की थी उन्होंने 1971 में. आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज सो फार advanced that you can go and alter your human genome also. So at that time, to alter this bacterial genome in 1971, where many of the techniques weren't known actually. So उस टाइम पे उन्होंने ये चीज की और उन्होंने स्यूडोमोनास प्यूटिडा का एक नया जेनेटिक इंजीनियरिंग किया और स्ट्रेन बनाया जो ये ऑयल स्पिलेज को कंट्रोल करता है. एंड लाइक so many rivers and oceans were actually cleaned. जहाँ जहाँ पे भी oil spillage होता है तो ये bacteria से like उसको culture करके just throw it on in the ocean or the river and like it will eat up the oil. So that's so fantastic. I can say he did that in 1971, right? So second thing today I brought to you all was it's AlgaDesk. So AlgaDesk, it's a bioreactor. So bioreactor सबको पता होगा, it's a kind of small machine. तो उन्होंने वो bioreactor को convert किया algal bioreactor में. And what did and this startup just started in 2014 in Europe.
and in European Commission since 2014 this project is still going on, it is not completed. What they have did is उन्होंने एक ऐसी टाइप की मशीन बनाई जिसको अलगा डिस्क किया जाता है. You can even Google it when after this event you can read about पूरा उनका. So I will tell you in short that what did they do is उन्होंने एक बायोरिएक्टर बनाया जहाँ पे उन्होंने बायोफिल्म्स कंस्ट्रक्ट की एल्गे की. उन्होंने एल्गे को कल्टीवेट किया एक रिएक्टर में और उन्होंने उसमें ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग का ट्रायल दिया और उन्होंने एक कंपनी में डाला. तो दैट वाज सो मच, मतलब इतना अच्छा था कि मतलब लाइक द यूरोपियन कमीशन एक्चुअली फंडेड देम with the money and told them to scale up this thing and most of the industries में deploy कर सकता है. तो up till now ये completely start नहीं हुआ है. It is yet in starting because scaling up is taking time. जो ऑटो हार्वेस्टिंग सिस्टम उन्होंने बनाई है उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं. तो आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग. सो व्हाट डज दिस बायोरिएक्टर डू इज जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो चिमनीज में से निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है, तो कंसीडर वडोदरा हैज जीएसएफसी, अंकलेश्वर में इतने सारे इंडस्ट्रीज है नजदीक में. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट प्लेस अप दिस बायोरिएक्टर यूनिट इन देयर इंडस्ट्री और उनके चिमनीज के ऊपर लगा देना है. ये अलगी जो होता है बायोरिएक्टर में, व्हाट दैट अलगी डू इज वो CO2 और अदर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स को एब्सॉर्ब करता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन बेस्ड लिपिड्स which is just 2 or 3 steps back from the biodiesel production. So उससे हम बायोडीजल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं. अभी सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन जो अभी उनको आ रहा है वो ये है कि वो एल्गल जो होता है वो एल्गल बूम हो जाता है कभी कभी, मतलब बहुत ज्यादा अलगी बढ़ जाता है, ठीक है. तो इसलिए उन्होंने ये सिस्टम बनाने का ट्राई कर रहा है कि ऑटो हार्वेस्टिंग कर पाए, मतलब बार बार उसको हार्वेस्ट ना करना पड़े. अभी का जो टेक्नोलॉजी है उसको बाई वीकली हार्वेस्ट हमको मैन्युअली करना पड़ता है. So they are taking this project ahead. So I think that's very much fantastic. हर कंपनी में ये लग सकता है अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है. तो एक और चीज मैं फैंटास्टिक लेके आया हूँ. सो यू ऑल माइट बी नोइंग कि गंगा क्लीनिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आके. सो उसमें जो नए स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे वो 3 जो मेन स्टार्टअप्स थे इंडिया के जो वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज हुए थे. MIT ने भी रिकॉग्नाइज किया था, यूनाइटेड नेशंस ने भी किया था. वैसे 3 स्टार्टअप्स थे जो अभी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं. अदर कंट्रीज में भी उन्होंने ये सिस्टम डिप्लॉय किया. तो देयर वाज अ स्टार्टअप कॉल्ड रोबोट, ROBOT, मतलब अपना जो रोबोट होता है वैसे ही रोबोट मतलब ऑटोमेटिकली वर्किंग बोट. उसमें क्या होता है, 0 ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इट इज कंट्रोल्ड बाय ड्रोन. तो उसमें होता ये है कि एक आर्टिफिशियल बोट होती है. व्हाट हैपेंस इन इट इज वो आर्टिफिशियल जो बोट होती है उसको हमें सिर्फ लेक्स में या रिवर्स में रख देना है और उससे क्या होगा, उसके ऊपर ड्रोन होता है जो सर्वाइलेंस करेगा हर जगह कि कहाँ कहाँ पे वेस्ट है. ये बोट उस जगह पे जाएगी, ड्रोन डायरेक्ट करेगा ऊपर से, यहाँ पे नीचे बोट है, यहाँ पे ड्रोन है. दिस ड्रोन गोज एंड स्कैन्स एवरीथिंग. ये बोट को डायरेक्ट करेगा कि इधर गार्बेज है, वो जाएगा और उस गार्बेज को उसकी सेंसर टेक्नोलॉजी से वो अपने अंदर ले लेगा और उसको रिसाइकल करेगा और उस अपने अंदर रखेगा. तो ऐसे इट कैन कलेक्ट दिस रोबोट कैन एक्चुअली टेक अप 600 kgs ऑफ वेस्ट पर डे. मतलब अगर एक ही यूनिट हम लगाए तो अभी 600 kgs एक ही यूनिट करता है. ऐसे होता है 200 tons ऑफ वेस्ट वी कैन एक्चुअली कलेक्ट in 1 year by only one robot. और this is very much cost effective क्योंकि ये पूरा सोलार पे चलता है and 24/7 एक्टिव होता है, ठीक है. तो जैसे ही गार्बेज आया ड्रोन उसको सर्वाइलेंस करेगा and it can directly go and clean that waste, right? So that was also fantastic. That was given up by a company, Omnipresent company करके, it's in Delhi. So if you all are interested you can even go there, right? So next thing that I came upon was guided ultrasonic monitoring of pipe systems. So as you all know, ONGC, Reliance, बड़ी बड़ी IOCL, BPCL, ये सब जो कंपनीज है वो सब अरेबियन सी में है, कोई ना कोई ओशन में है, ठीक है. बहुत सारी ऑयल कंपनीज दुबई में भी है, ठीक है. तो इन सब में क्या होता है, उनकी जो पाइपलाइंस होती है वो सब ओशन से या रिवर से जाती है
हर रिवर बेड से जाती है मेजरली। तो कभी कभी क्या होता है, वो पाइप्स मतलब इट गेट लीक्स अप, तो वो पाइप कहीं ना कहीं टूट जाती है और लीक होता है और बहुत ज्यादा ऑयल स्पिलेज होता है। तो ऐसी एक सिस्टम निकाली थी जिसको कहते हैं गाइडेड अल्ट्रासोनिक मॉनिटरिंग पाइप सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे ऑयल स्पिलेज, मतलब कहाँ पे होल लूप होल है। तो वो लूप होल पहले ही आइडेंटिफाई हो जाता है, या फिर ये भी आइडेंटिफाई हो सकता है कि कहाँ पे लूप होल हो सकता है, किस जगह जगह पे प्रेशर बढ़ रहा है ऑयल का। और ऑयल जब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ऑयल का बहुत प्रेशर में जाता है, तो हो सकता है कहीं पे लूप होल हो जाए। तो ये सिस्टम जो बनाई थी वो एक 23 ईयर ओल्ड IIT मद्रास के स्टूडेंट ने बनाई थी, और दिस गाय वाज इवन रिकॉग्नाइज्ड इन MIT। सो दिस इज अ फैंटास्टिक स्टार्टअप अगेन कि ऑयल स्पिलेज मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये चीज है जो चल रही है अभी भी। गंगा के रिवर बेड्स पे जितने भी ऑयल पाइप्स है अभी भी ये चीज डिप्लॉयड है। ये सिर्फ हमें नहीं पता, हो सकता है कि वी डोंट नो, but the companies, the oil companies are already using this kind of technologies. So that might be something new for us, but someone who is working in the Reliance company or some refinery company or oil company, he or she might be already knowing कि ये system है, exist करता है। So there was another startup called Help Us Green। वो उसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा हाई रेटेड स्टार्टअप वो हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने क्या किया, उसमें जो फ्लावर्स होते हैं, वेस्ट फ्लावर्स जिसे हम वर्शिप करते हैं, अब भगवान को ऑफर करते हैं, गॉड को, और कभी कभी गंगा में नहाते हैं तो उसमें भी रिवर्स को भी ऑफर करते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज, ये जो फ्लावर का जो वेस्ट होता है, फ्लोरल वेस्ट, उसको ये लोग कलेक्ट करते थे और उसको रिसाइकल करते थे, उससे इंसेंस स्टिक बनाते थे, सेंट बनाते थे, कलर्स बनाते थे नेचुरल, ये सब करते थे। और मतलब वहां से इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गांव में, क्योंकि गांव वाले लोगों से करवाते थे, तो वुमेन से जो एम्पावर्ड नहीं होती इतनी ज्यादा, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिला। और ये इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्लावर वेस्ट कलेक्ट करते हैं टेम्पल्स और हर जगह से, उसको रिसाइकल करते हैं, इंसेंस स्टिक बनाते हैं, परफ्यूम्स बनाते हैं, अत्तर जो होता है नेचुरल वो बनाते हैं। सो दैट वाज अ फैंटास्टिक आइडिया, और ये 2016 में ही लॉन्च हुआ है, वो भी इंडिया से ही। सो आई थिंक ये भी बहुत अच्छा एक स्टार्टअप मुझे मिला। एंड वी ऑल नो डॉक्टर बिनेश देसाई। सो उनका नाम मोस्टली सबको पता होगा आज। What he is doing is he created a eco brick। मतलब उन्होंने क्या किया, वो जब 6th या 7th स्टैंडर्ड में थे, I'm just telling a short story of him. So when he was in 6th or 7th standard, he was playing with chewing gum जो हम नॉर्मली खाते हैं, और वो चालू क्लासरूम में च्युइंग गम खा रहे थे इन 6th और 7th स्टैंडर्ड। एंड उन्होंने क्या किया, वो च्युइंग गम अभी ऐसे लगा तो सकते नहीं है टीचर के सामने, तो उन्होंने वो च्युइंग गम को पेपर के अंदर डाल दिया, पेपर को क्रश किया, च्युइंग गम डाल दी और क्रश कर दिया कि भाई बाद में फेंकूंगा इसको। तो उन्होंने जब बाद में उस चीज को टच किया ना, पेपर एंड च्युइंग गम को, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गई थी वो च्युइंग गम, और वो पेपर से मतलब इतनी इजीली डिटैच नहीं हो रही थी। तो वो चीज तब फेंक दिया उन्होंने। फिर घर आके उनको रियलाइज हुआ कि ये कुछ मतलब ये कुछ उनको समझ में नहीं आया। सो देन व्हाट ही डिड इज, उन्होंने वापस किया, उन्होंने उसमें वेस्ट डाला बहुत सारा, घर का भी वेस्ट, मतलब जो प्लास्टिक होता है, मतलब वो क्रश करके पेपर होता है उसको, और उसको एक नहीं 4-5 च्युइंगम में डाल के उन्होंने एक बॉल बनाया। और वो बॉल इतना ज्यादा मजबूत हो गया बाद में कि उनको रियलाइज हुआ कि ये बहुत मतलब ये कुछ नई चीज है, तो उनको तब मालूम नहीं चला कि क्या है। आफ्टर दैट ही when he entered his masters in environmental science he did, and he even did PhD. Now he's of 28 years। तो जब वो 25 years के थे तब उनको थोड़ा स्ट्राइक हुआ वापस कि ये चीज मैंने की थी, तो उन्होंने पूरी एक कंपनी डाल दी जो ऐसी पेपर वेस्ट जो होती है ना वो कलेक्ट करती है और उसमें बाइंडिंग मटेरियल डालते हैं। च्युइंगम वाज जस्ट मतलब वो छोटे थे तो उन्होंने च्युइंगम देखी, फिर जब when he did PhD उन्होंने उसमें बाइंडर्स डाले, अलग अलग टाइप के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, बाइंडर्स डाले, तो वो पेपर वेस्ट को वो रिसाइकल करते थे,
उसमें वो बाइंडर्स डालते थे, उसमें बहुत सारा वेस्ट लेना स्टार्ट किया उन्होंने, जैसे टेक्सटाइल वेस्ट होता है, मेटल वेस्ट होता है, उससे वो लोग सब करते थे, और उन्होंने वो बाइंडर डाला और एक ब्रिक बनाई वेस्ट से, और वो ब्रिक यू विल बी एस्टोनिश्ड, वो ब्रिक 40% कॉस्ट इफेक्टिव हुए अपनी कन्वेंशनल जो रेड ब्रिक आती है जिससे हमारे घर बनते हैं, तो वो 40% कॉस्ट इफेक्टिव है, और दूसरा वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, मतलब डबल बोल सकता हूँ मैं, 2 टाइम्स ड्यूरेबल है, मतलब ब्रिक हम नीचे फेंकेंगे रेड ब्रिक तो वो टूट जाएगा, ये ब्रिक नीचे फेंक के टूटता भी नहीं. So I think that's the power of this, I can say, the what we call waste. So there's nothing like waste, so we can, so that man, he recycled it and he did so big project, and like after that he made his other 3 companies. One is working with the electrical appliances. वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मतलब ये वेस्ट से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाते हैं, इंटीरियर्स बनाते हैं, और ये सब काम उन्होंने वुमेन्स को दिया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. जो विलेजेस की वुमेन होती है वलसाड़ में, अहमदाबाद में, इस जगह पे डांग एरिया में, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, और इसमें कुछ धुआं भी नहीं होता है इतना, ठीक है, देयर इज नो, मतलब धुआं होने के चांसेस नहीं है, सिर्फ मोल्ड में डालना है और मोल्ड क्रिएट करना है. वो कन्वेंशनल ब्रिक में तो उनको पूरा फर्नेस में भी डालना पड़ता है, इसमें फर्नेस में भी डालने की जरूरत नहीं है. सो द एम्प्लॉयमेंट वाज गिवन टू द वुमेन of Dang, Valsad and such districts. So I think that's also fantastic, and nowadays he's like called a recycle man of India. उन्होंने नहीं तो भी 800 टन्स वेस्ट रिसाइकल किया है लास्ट के 2-3 सालों में. 800 टन्स ऑफ वेस्ट रिसाइकल किया है ये ब्रिक्स बना के. ब्रिक्स बनाते हैं, इंटीरियर्स बनाते हैं, रोड्स भी अब तो बनाने स्टार्ट किए गांव में. गांव की ही विमेन इसी वेस्ट को कन्वर्ट करके गांव में ही रोड बनाते हैं. तो इट्स अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट that I came to know. और उनके बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, and there are many other good startups all over the India, और होते रहते हैं बहुत. प्राची also has one of our activity and startup that she is doing, she will be telling. So मतलब ये सब एनवायरमेंट में है. सो ये लोगों ने सॉल्यूशंस ढूंढे, मतलब जो चीज नॉर्मल होती है उसको देख के उन्होंने सॉल्यूशंस ढूंढे. तो यू कैन ऑल्सो डू समथिंग फॉर एनवायरमेंट, जस्ट प्लांट ए ट्री. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बहुत कुछ करो, और जैसे सुधीर सर ने बोला, एक प्रॉपर ट्री प्लांट करो. ऐसा नहीं कि कुछ भी प्लांट कर दिया या कुछ भी कर रहे हो, नहीं. प्लांट अ प्रॉपर ट्री, प्लांट अ मेडिसिनल प्लांट, प्लांट नीम और समथिंग, और उसकी टेक केयर करो. ऐसा नहीं कि प्लांट करके भूल जाओ. टेक केयर ऑफ दैट थिंग. तुम्हारा जो ई वेस्ट जनरेट होता है उसका भी ध्यान रखो, घर में प्रॉपर डिस्पोज. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एंड आई थिंक ये सब सुन के बहुत ज्यादा एनर्जी फील हुई होगी कि हमें भी कुछ करना है. सो जस्ट प्लांट अ ट्री. टुमारो आल्सो यू कैन डू. इट्स नॉट नेसेसरी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ही तुमको प्लांट करना है. ट्री प्लांटेशन कभी भी हो सकता है. यू डोंट नीड अ डे फॉर इट, राइट? सो आई थिंक आई एम डन. प्राची, thank you so much. Sudhir sir, thank you so much for this opportunity. So very good, Dhairya. Very good. thank you, sir. Thank you so much. Very good. So now I would like to invite on the talk for Prachi. So she's my good friend. So Prachi Vyas, she is a postgraduate student in environmental science at the Maharaja Sajirao University of Baroda. She has fantastic leadership qualities, backing up with the faculty representative. She has her keen interest towards plastic waste solutions, and also started with an initiative, Project Plastic Coolers. Project Plastic Coolers is an initiative to create awareness about reduce, recycle, and reuse and refuse and repurpose. Oh, reduce, reuse, recycle, refuse, and repurpose of a single plastic product. मतलब एक plastic product का. And she has also been a part of project How to Make Zero Carbon Emitting Building with the help of solar power at MSU Baroda. So with this fantastic initiatives that she has worked on in the environmental field, I would like to call her for the today's event.
Thank you so much, Daria, for this introduction. I will start with a quote: Mata Bhumihi Putroham Prithvivya. We are the son and daughter of Mother Earth. Okay, so as you mentioned about plastic coolers, it is one such initiative which interestingly involves students and society through innovative activities based on reduce, recycle, refuse uh, single-use plastic products. Single-use plastic product is one of the biggest hurdle in maintaining ecological balance. Plastic coolers consist of activities like survival rule, plast break challenges, plast prints, trash art 1 week challenge for how to reduce the plastic in our household waste, ecostar and ecosion, which aims to inform the student about the global challenges regarding environment, ecology, balance plastics and its alternatives, unorganized single-use plastic waste, ignite them to take a step forward to reduce the carbon footprint, as our one step is equal to 130 crore steps towards global betterment, as well as inspire them to brainstorm from creating best opportunity out of waste for new India and be a plastic cooler. This initiative aims to support for the sustainable development goals to transform the world by United Nations, namely Goal 11, SDG Goal 11, SDG Goal 12, SDG Goal 14, which are based on sustainable cities and communities, life below water, life on land, and also Millennium Development Goal 7 to ensure environmental sustainability by UNICEF India. It also looks forward to promoting plastic credits, extended producers' responsibility, and circular economy for proper waste management of single-use plastic, as guided by the United Nations. It also aims to empower through repurpose of single-use plastic. This initiative is taken up in association with the Department of Environmental Studies of the Maharaja Sajirao University. As In this, we went to different schools like Ambe Utkarsh Vidyalay, then DR Amin School. In that, we interacted with the students of 7th, 8th, 9th, and 10th standard and made them aware about all this topic and how they can implement this in their daily routine. As you all will be knowing that the plastic polythene bags, we can replace it by the paper bags or the cloth bag. I am only speaking about this, but if I'll not implement this all, it will be of no mean. So after that, I have also implemented this for myself. I am not using any polythene bags now. I am not using any unnecessary plastic products because the maximum use of plastic products will be discarded in the oceans, and that will directly affect the marine ecosystem, and most of it the turtles will face because turtles um, feel that this is the jellyfish which is their food, and they will consume that, and it won't be jellyfish, it will be the plastic products, so it will harm mostly to the turtles of oceans. As Daria said in introduction about the zero carbon emitting building, so you all will be aware about the solar panels, which is the in which the government is also supporting in the best way possible to make a sustainable environment and sustainable livelihood. So in that, I collected the electricity bills of the CV Raman building of the science faculty, and by that I calculated how much electricity is being used by the building per month and per yearly. And by that I also calculated how much capacity of solar panel uh, will be should be installed on that building to reduce that emission. So for that, the investment was of 5 lakhs, but it was proven that rupees can be re that rupees can be recollected within 3.5 years of investment, because after that the electricity will be generated will be that much that it will save the units, and we can give back to that we can give it back to the electric city board. This is how I carried on with my project. Yes, and I would like to
thanks Sudhir sir for giving this opportunity to speak on this day of World Environment Day. Being a student of environmental science, I always keep on going with different projects and involving students because they are the most enthusiastic for getting involved in such activities. So this is the best part to interact with them. Thank you so much, sir. Very good, Prachi. You and they both did very well interactions as well as put some insightful views. Thank you very much. Now over to Dhairya. If any questions, we will hear. Sure, sir. So, if someone has any kind of any question or any query, or you want to tell anything, you want to comment, you want to interact, then also this platform is open for you all to talk. So just feel free. Whatever views do you have regarding environmental problem solution, so you can even interact about those, right? Okay. So I think that's all I can say. That was a Okay. huge amount of information that they got to process actually in their head today. So I think processing would take some time inside their CPUs. Okay. So you can Okay, connect so with anytime with Sir, with Prachi, with me, anytime you have any initiative. Okay. Sir, can you just share some list of plans or something like that? If वो possible? मैं व्हाट्सएप पे मुझे मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ मैं 9824221336. So if anybody wants any information, I will share by my WhatsApp. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So Sir has given his number, so I think you guys can connect. Okay. So let's end this event today, right? Okay. So Thank thank you. you, Prachi. Thank you, Sudhir sir. Thank you all the audience for joining. Thank you. Thank you. Thank you, sir.